ओके ना, ग्रे लिस्ट के अंदर होने से क्या नुकसान होता है? आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि कोई सैंक्शंस नहीं लगती, तो फिर इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन कि बैंकिंग सेक्टर को क्या सैंक्शन लगेंगी या ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके ऊपर सैंक्शंस कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि है ही नहीं। लेकिन ग्रे लिस्ट के ऊपर होने से भी नुकसान होता है। आई मीन टू एक्सप्लेन दिस टू यू, लेट मी टेल यू व्हाट काइंड ऑफ losses that we had to bear in the last 4 years for being on the gray list. The risk number one that we bore was that we lost a huge amount of investment. December 2020 के अंदर एक research report थी. It's just I just slipped my mind the name of that research report. दिसंबर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ कि 2018 से लेके जब से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया 2020 तक पाकिस्तान ने 38 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लूज की है. द रीजन बीइंग कि वो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट कंट्री. दैट आल्सो रैटल्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स. ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान. दूसरा जो बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ while being on the grey list was the negotiations with the IMF. मैंने अभी आपको बताया कि IMF and FATF they interact with each other. And when Pakistan was coordinating and negotiating with the IMF to get loan, Pakistan was on the back foot because the restrictions and the conditions put up by IMF were this time tougher. They were this time tougher. FATF का भी जिक्र है IMF के प्रोग्राम के अंदर और उसकी वजह से पाकिस्तान को मजीद स्ट्रिक्ट कंडीशंस का सामना करना पड़ा. तो ये भी एक नुकसान था because our hands were tied. मतलब आप ये समझ लें कि ये लिखा हुआ था IMF के प्रोग्राम के अंदर कि पाकिस्तान नीड्स टू फॉलो FATF की recommendations, and if those don't get followed, how are we going to get the money? Second जो एक नुकसान. Third और सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को for being on the grey list is the image of Pakistan that was damaged because Pakistan shows itself, and not just shows itself, we have also proved it over the years through our actions that we are not the breeding ground of terrorism. We are the ones who are against it. In fact, we are the most affected country in the world when it comes to terrorism. All right. So I'll move on. Now let's move towards the program that was given to Pakistan. As in, what were those things? 38 billion. What were those recommendations given to Pakistan by the FATF? हुआ ये कि initially FATF gave Pakistan 27 set of recommendations, and they were then later increased to 34 set of recommendations. Okay. We are not going to discuss those recommendations one by one because, of course, those are quite technical in nature, very specific in nature, and we don't have to know it. What we do need to know
is what kind of recommendations were they, like what areas were they focusing upon, and that's what you need to know. और ये अभी हम पढ़ने लगे कि किन किन चीजों की के ऊपर पॉइंट आउट किया एफएटीएफ ने पाकिस्तान की, और किन चीजों के ऊपर हमें काम करने को कहा। इससे हमें ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में क्या कमजोरियां थी पाकिस्तान के इस फाइनेंशियल इकोनॉमिक निजाम के अंदर, और उन्होंने कैसे किन किन चीजों के ऊपर काम किया। नंबर वन, द recommendations were related to identification of the risks। ठीक है, ये एक set of recommendations। What FATF wants from Pakistan is to identify the loopholes, identify those risk factors present in the current financial system which are causing money laundering and terrorist financing। देखिए, एक निजाम के अंदर जब कमजोरियां होती हैं तो उसी को मिसयूज किया जाता है। So what it's the foremost recommendation of the FATF is to try and identify those loopholes present in your system so that you can close them. Number one. Number two is pursue. Their set of these set of points are about pursual of what? Pursual of जो वो पैसे जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ट्रैवल करते हैं, वो पैसे जो कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग के थ्रू ट्रैवल करते हैं, प्रेफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको परस्यू करें। लेकिन यहाँ पे ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि परस्यूअल तब होता है पैसों का when we know about it, and we know about it only when we have a data about it। We only have a data about it when we have a system which monitors all of it। ठीक है, which and it requires क्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल जो एक इंटरेक्शन है जो कि पाकिस्तान के अंदर मिसिंग था। अब हमने काफी इम्प्रूव किया इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, बट देयर रिकमेंडेशंस आर अबाउट कि वो लोग, वो पैसे जो कि इन्वॉल्व है इन क्राइम्स से उसका पीछा किया जाए, वो लोग जो कि इन्वॉल्व हैं इस एक्टिविटीज में उनको अप्रहेंड किया जाए, उनके फैसिलिटेटर्स को पकड़ा जाए, established cases against them, get punishments against them and then punish them। ये एक लॉन्ग सेट ऑफ इनकी रिकमेंडेशंस जो कि हमारी तरफ रही हैं उनकी तरफ से। थर्ड, अप्लाई, एप्लीकेशन। अब ये यहाँ पे आपने ये चीज समझनी है, अप्लाई व्हाट। देखिए, पहले उसमें आपको मैंने बताया कि इसका मकसद है to identify the loopholes present in the system। What would you do once you identify them? You apply those preventive measures which would stop the misusage of the financial organizations or financial institutions। हम ऐसे इकदाम लें। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझाना बहुत जरूरी है कि when it comes to the financial system or any sort of a set of policies in any country, तीन किस्म के इदारे होते हैं। हम चूंकि अभी हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े हुए तीन किस्म के इदारे हैं। ठीक है, एक वो जो कि पॉलिसी मेकिंग इदारे होते हैं, एक वो तरह के इदारे जो कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करते हैं, और एक वो जो कि पॉलिसी एडजुडिकेशन करते हैं। ताकि हमें मजीद जरा क्लैरिटी हो जाए, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड पॉलिसी एडजुडिकेशन। पहले हम बात करते हैं पॉलिसी मेकिंग इदारों की कि किस तरह के इदारे हैं जो कि फाइनेंशियल पॉलिसी मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व है। चले आप बताइए। हमारा स्टेट बैंक इसके अंदर इन्वॉल्व है, हमारी गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट में स्पेसिफिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा,
अगर हम बात करें पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन या पॉलिसी एग्जीक्यूशन की, तो उसमें किस तरह के इदारे इन्वॉल्व हैं? उसमें देयर इज अ ह्यूज लाइन अगेन। उसके अंदर हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आ जाता है, FPR, SECP, and your NAB, FIA, anti-narcotics, customs, and so on. But these are the notable ones. They are the ones who have to implement the policies given to them. What about policy adjudication? Okay, जो हमारे बैंकिंग कोड्स हैं, जो हमारे एंटी टेररिस्ट कोड्स हैं, जो कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, but generally the judiciary, ठीक है? Now, why did I just tell you the structure? कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स चाहिए वो इन सबके अंदर चाहिए, ठीक है, ताकि हम सबको इंडिविजुअली कंसिडर कर सकें. We need those preventive measures. We need to reform those policy making institutions, policy implementation institutions, as well as policy adjudication institutions. तो ये चीज क्लियर हुई आपको? Now, further, establish the powers and the responsibilities of the competent authorities. देखिए, FATF की एक रिकमेंडेशन ये भी है, उनकी एक ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं उनकी जुरिस्डिक्शन क्लियर नहीं है. Their jurisdiction, their domain isn't clear, their responsibilities aren't clear. That's why their powers aren't clear. ठीक है? तो जब ये चीज होती है, इसका मतलब है कि it is hard for the organization and the institutions to work not only amongst themselves but with each other. तो ये भी इनकी एक डिमांड रही है कि हमारी जो इदारे हैं जिनके अभी हमने नाम लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उनकी पावर्स को, उनकी जुरिस्डिक्शन, उनकी डोमेन को हम इस्टेब्लिश करें. एंड एक और रिकमेंडेशन जो कि दी जाती है वो ये कि हमारा जो इकोनॉमिक इकोनॉमी है हमारी, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को इंट्रोड्यूस करवाने की बहुत ज्यादा जरूरत है. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इट? देखिए, पाकिस्तान की जितना रजिस्टर्ड एस्टैब्लिश्ड फॉर्मल इकोनॉमी का साइज है, एक अंदाजे के मुताबिक इतना ही बड़ा साइज इनफॉर्मल इकोनॉमी का है. एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी हम किसको कहते हैं? जो कि रजिस्टर्ड नहीं है. इसका एक नुकसान ऑफ कोर्स ये है कि जो अनरजिस्टर्ड इकोनॉमी होती है वो टैक्स से बच जाती है, लेकिन यही अनरजिस्टर्ड इनफॉर्मल इकोनॉमी इन मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसे क्राइम्स के अंदर भी इस्तेमाल होती है. तो कोई मुझे बता सकता है कि व्हेन आई से एनहांस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, लाइक हाउ कैन वी ब्रिंग इट? व्हाट हैव वी डन टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट? ठीक है, हमने, देखिए, पहली बात ये है कि वी आर moving towards and we're trying to improve the access of the banking services to the people, because the more connected we are through banking system, the more transparent is our information,
about our assets. पहली चीज. दूसरा, there was another program which was being worked upon के digitalization of currency और discouragement of using the cash. हम promote करें digital transactions को, mobile transactions को, internet transactions को. जाहिर बात है उससे तो फिर आप नहीं छुप सकते. ठीक है. और टैक्स में इसको आसान किया, टैक्स पेयर बनने के लिए काम किए. दैट्स अनदर डिबेट कि how where do they stand and what have they done, but they of course work towards it. Now इनके अलावा, इन recommendations के अलावा, यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, ओके. इन recommendations के अलावा मजीद क्या कहा पाकिस्तान को FATF, यानी कि वो क्या recommendations के points में लिखा हुआ है? What FATF wants from us, what they wanted from us, is that we demonstrate, we show it to them that our authorities, जो कि policy making, implementation और adjudication bodies हैं, they not only have enough financial resources, human resources, and technical resources, but more importantly, they are cooperating with each other. ये cooperation का mechanism बहुत important है. देखिए, जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, टैक्स रिलेटेड हो, कस्टम्स रिलेटेड हो, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड हो, ट्रांजैक्शन रिलेटेड हो, दे आर समहाउ लिंक्ड विद ईच अदर. और अगर इन मुख्तलिफ इदारों के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, दे आर नॉट इंटरैक्टिंग और कोऑपरेटिंग ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म, थिंग्स कैन गो हेवायर. तो ये उनकी डिमांड हमसे रही है. इसी तरह दे हैव डिमांडेड फ्रॉम आवर जुडिशरी to take stern actions, stern decisions against the instigators of money laundering and terrorist financing. उनका मकसद है कि हमारी जो जुडिशरी है वो सख्त इकदाम, सख्त फैसले ले. इसका फायदा क्या होगा कि एक डेटरेंस क्रिएट करना चाहते हैं. एंड they also have demand from our law enforcing agencies, जो कि इससे रिलेटेड है, स्पेसिफिकली FIA, and then NAP, police, anti narcotics, even customs, even FBR. These are all law enforcing agencies, to pursue the cases against those people and have enough information and knowledge about them, have a money trail, establish the case, and उन लोगों को आप इंडाइट करवाएं, उन लोगों को आप इनक्रिमिनेट करवाएं, उन लोगों को आप सजा दें. ये उनकी objective है. और do not let the terrorist organizations to resurface. क्योंकि हमसे ये डिमांड होती है कि हम उनसे रिलेटेड जो लोग हैं उनके अकाउंट्स को फ्रीज करते हैं, उनके एसेट्स को फ्रीज करते हैं. एंड फाइनली उनकी हमसे एक डिमांड ये भी रही है, इट्स वेरी स्पेसिफिक डिमांड, कि व्हाट FATF वांट्स कि पाकिस्तान शुड फुलफिल the United Nations Security Council's resolutions. ये दो जो रेजोल्यूशन के मैंने नंबर लिखे हुए हैं, 1267 and 1373. These are very important recommendations, resolutions, because ये वो दो resolutions हैं जिनको कहा जाता है कि they are the foundation of anti-terrorist regime in the world. Resolution 1267 फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ये आई थी बैक इन 1999 अगेंस्ट तालिबान, के तालिबान को किस तरीके से उन लोगों को, यानी हमने सैंक्शन करना है, हाउ टू नॉट लेट
the people involved with Taliban to get out of Afghanistan, उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करना है, उनको बैन करना है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने हैं. This was all resolution 1267 was about, because according to those people who brought this resolution through Security Council, Taliban need to be stopped. They overthrew a government और उसको terrorist करार दिया. 1373 जो resolution थी ये 9/11. अब बेसिकली 1373 के अंदर क्या लिखा हुआ है और 1267 के अंदर भी 1373 ये कहती है कंट्रीज को कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन